Okay, great. So, guys, welcome all. It has been already 4 minutes past, and I think that we should start our session. Thank you very much for being in this session and taking out your time. So guys, I was just discussing with Tejal about the OD initiatives they are having in their organization, right? So, guys, what do you think about, according to you, what is HR analytics? आज हम बात तो कर रहे हैं उसी के डिस्कशन के लिए मिले हुए हैं. वी आर हियर gathering together for discussing or understanding at least analytics. So I would like to know your views first. Hi, Nitish. Can I speak something Yeah, about yeah, HR please, analyst? please, What please, I please. understand. See, understand this thing. This is not a school or college class, so don't ask for permission, right? Okay. Just unmute yourself and speak yourself. Okay. I understood some HR and regarding analyst is analyzing the data from the HR like recruitment, performance, analyzing employees engagement, recruitment analyst, such a kind of management data, analyzing the data of management. Okay. Shortly, I observed regarding this HR analyst. Okay. Anyone else? So Gayatri, you used one word over here, analysis. Sorry? You used one word that is analysis. Yeah. Correct. So, is there any difference between analytics and analysis? Analysis in that I have to see that difference. I'm just giving a food for thought, right? So, Yeah, so just think I over didn't it, observe that word. right? Because many times we use this word interchangeably, right? So, anyways, thanks for sharing your views. And let me start. Is my screen visible, guys? Yes, it is. Yeah, visible. Yes. Yeah, Arun, you didn't start with your introduction. I was in a meeting till then, and another 5 minutes after that, I'll do it. Please. Okay, Excuse okay, me. okay. No worries, no worries. Take your time. Okay. So, guys, welcome to HR Analytics Masterclass or webinar, whatever you say. Right. Today, we are going to dwell into some analytics fundamentals and understand how actually analytics works and to what extent, as an HR professional, we can go into analytics and what kind of process improvement we can bring it out, because HR analytics per se is more of you try to find out logic between two things, and we will look into it, right? But I would like to start my presentation with that HR analytics is the foundation skill that empowers all strategic decisions in HR, or says all strategic roles in HR. Can anybody help me elaborate this statement? Or in short, we can say it is mother of all skills. Yeah, I just want to answer on that. Like we had a discussion regarding the previous dashboard. So we Yes. were just discussing about the attrition. Now we understand why the attrition was happening. So that is the overview, and it is a complete picture
the blueprint which we are just getting out of it, so that we can just make the decisions based on that, Informed and what kind decisions. of, yeah. So Correct. we can, where we just want to decentralize, and what are the things where the loopholes are being, the bottlenecks actually. We just find it out on the basis of what are the root and causes, and how it is affecting to the organization and the team. And with that, what the goals, they just have to restructure the strategies. So for that, it is being used. Absolutely, Disha, you are on point on that. That where HR analytics basically helps you to get out of the box. You move out of the box and try to see the things, or try to visualize the things, and try to find out the hidden patterns that data is trying to tell you. Correct. And once you get those patterns, once you decide upon this, you will be able to take more informed and data driven decisions. Correct. So this is where, means, be it in the area of, say, manpower planning or recruitment or talent acquisition, or your HR operations, or your payroll process, or your attendance system, or your PMS, learning and development. Everywhere these skill sets are required, right? And for that, basically, what you should have is basically a right skill to give it to your top management, or directors, or CHRO, or C-suite board members, because they are used to take, or they are actually having habit of taking data driven decision. Correct. See, I will give you a very simple analogy. How many of you are working in startups or a small organization of, say, 200, 300 employees? Maybe you would be directly reporting to a director. कोई है ऐसी प्रोफाइल वाला? Those who are into, say, 300, 500 crore company. Right. See, so just in case, if you're working in this kind of organization, or any organization per se, right? अगर आपकी कंपनी सेटअप हुई है, इसका मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं आपके फाउंडर, डायरेक्टर ने बैंक से लोन लिए होंगे। करेक्ट। And what they would have shown to bank, right? Because that bank has given him few crores or few hundred crores of loans. And this is only possible if they have projected the right data in front of the investors. So your directors or your founders are used to making a data-driven decisions. Right? So many times what people tell me is that I'm not getting budget to do my training programs, to do my to do my engagement initiatives. हमको पैसा ही नहीं मिलता, हमको बजट ही नहीं मिलता. What I think is that he would be looking for ROI, return on investment. He is not having problem with giving 3 lakh, 4 lakh, or even 10, 15 lakh rupees budget. But then the only question he would have in mind is, what is the ROI of this program? What I will get in return? Does it make sense, guys?
Yes. So HR needs to understand that how they can prepare a business case where they can deliver 2 to 3 times the value of the investment, where they can give 2x, 3x ROI. We say that we want to take people to picnic. Let's arrange a picnic or let's have a get together. He will see it as a cost and not as an investment. And that is the reason HR is a cost center, not a profit center. You all must have heard this word. Have you heard it? कि HR cost center है कि profit center है ना? How do we make it profit center? सुना होगा ना सबने? Yes, sir. Right. So that is a big question, and it depends on us that how do we project ourselves? What kind of data we provide to management to make decisions? How convincing is your data? And to do this thing, fundamentally, we will have to come out of our mindset. We will have to broaden our horizons first. How many of you think that this is required? Type yes in chat if you don't want to speak up. Tapi kita jadi mengangkat kursi અમે થોડી અડધો કલાક ખેંચીને પછી સુતા સુતા ના સાંભળજે સાંભળવું છે. Right? So basically, if we see, the illiterates of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. I think this is all the fundamental premise our training and development department is surviving on. Right? So somewhere we will have to unlearn and relearn the things. And that is what my attempt is today for you, to give the glimpse of what needs to be unlearned and what needs to be relearned. Right? So keep your minds as open as a parachute and let's deep dive into these areas. So what is CEO's expectation from HR? So CEOs basically wants, or employer basically wants, that my HR should involved in resolving the competitiveness and performance issues more than the role of protector and administrator. So basically he is expecting you to do or get involved in the more strategic issues. बट आप लोगों का काम ही ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा, आप फायर फाइटिंग में लगे हुए हो. और होता क्या है बेसिकली, when you start doing these things in initial stage of your career, say initial 5-6 years, then it goes into your habit level. And when it goes into a habit level, then even if you become a manager, you were executive, you were doing operationally heavy job, you cracked 2-3 interviews and somehow you became manager in 6 to 7 years or 7 to 8 years. But now the problem is कि जो आप लोगों की हैबिट बन गई है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, the same habit continues at managerial level also. Now, when you transition from an executive to a manager level individual in your career,
The competence required is changing. Right. So expectation is more on operation, less on operational part, or says 30%, say 40% on operational part and 60-70% on strategic part. But then we are involved in other way around situations, right? If you see the globally, the environment of business is not good at all currently. The economic uncertainty, especially after COVID, the intensified competitions, right? And this requires organization to develop organizational capabilities. They need to be fast, they need to be cost effective, they need to be responsive, they need to have a competitive advantage. And for this, HR needs to be business savvy, act as a change agent, and help business to achieve their growth. So we need to be business growth enablers. Correct. So the question is that many times you must have seen that I came into HR because I like people. There is no people love or people soft side of the business. We need to make them employees competitive so that they contribute in the organization and organization grows. It is as simple as that. We need to create our value. Right? And that is where the role of strategic HR business partner comes into play. So we will look into this, discuss this role little bit later, right? But then this is what business partner needs to understand. But the problem is that we do get fancy designations of business partner role, HRBP. But the fact is that if you analyze their job descriptions, if you analyze the work they are doing, they are just doing as a regular HR employee. Because there is a lack of understanding of business, there is a lack of understanding of strategy, and there is lack of understanding of partnership role. So when these three things are not integrated with each other, you cannot deliver the strategic HRBP role. Right? Second is acting as a change agent. So you need to understand the change management models. We will look into this. So we need to understand कि कौन से काम हमारे ट्रांजैक्शनल है और कौन से काम हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल है. सो ये पिरामिड को हमको कहीं ना कहीं इन्वर्स करना पड़ेगा. आप इनिशियल करियर स्टेज में ट्रांजैक्शनल वर्क में ऑक्यूपाई रहेंगे, and then slowly and gradually you will transit into a role of transformation. Where you are involved more in strategic planning, organization design, performance management, cultural issues, right? So now if you see the type of analytics that we have in organization. So normally customer analytics, operational analytics, financial and people analytics. So what is people or HR analytics? It's basically an approach of managing people at work, right? Where business leaders can make informed decisions about their people. And why it is important? Because the CEOs basically form great strategies on presentations and on board. But ultimately, who is going to execute?
Who is going to execute your business strategy? Am I audible, guys? Yes, sir, audible. Nobody is responding. That is the reason I had to ask. Sir, maybe the business leader. Or ultimately, it is the people who basically execute your business strategy. Correct? And now to execute this business strategy, these people need to be competitive. And who is responsible to make these people competitive? HR. Exactly. Now, when you go to a director or a founder and asking for, say, 2 lakh rupees for a picnic, he is getting frustrated because of the thought that I want him to work or make my people more competitive so that they can achieve business growth. And he is talking about doing parties and picnics for employees. Would you do, if you are in his place, would you do such kind of investment? Please understand one thing, there is difference between entertainment activities and engagement activities. एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट एक्टिविटी अलग है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी अलग है. I hope it's clear now. Yes, very clear. Yeah. So it's basically application of statistics, some modelings, statistical modeling, and analysis of employee related factors to improve the business outcome. All right. Now you need to understand that what are my business outcomes and how HR can contribute to, or HR can deliver those business outcomes. How HR can become enabler for that. So that is what HR analytics or people analytics is all about. Right. So normally what happens is that when you say analytics, people immediately think of statistics. अरे बहुत complex problem होगा, बहुत कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. Analytics is a mental framework, a logical progression first and a set of statistical tools second. It's basically what the logic you use to connect two matrices. Right? How many of you are from manufacturing setup? You can unmute yourself and discuss. See, I'm more of a person who would like to discuss out things rather than just going one-way communication. And if that communication or if that interaction is not there, I'm not enjoying the session then. My problem is that, and that is my biggest problem. I want some interactive audience. So how many of you are from manufacturing? Anyone? I'm currently consulting in manufacturing. I have around 4 companies where they are in consulting domain. So you can ask questions. Okay. No, I'm not going to ask any question. I'm just going to ask you a simple thing that what you might have observed is that if absenteeism is high, the overtime is also high. Correct? Very true. Right? Or if absenteeism is low, then overtime is also low. Now,
if you see simply, then what you are doing, you are taking two metrics. One is the absenteeism matrix and another is the overtime matrix. And you are trying to find a correlationship between these two metrics. And if you see the data, it would be easily evident that basically there is a direct proposition or direct positive correlationship between these two metrics. So if one increases, another also increases. Correct? यही है एनालिटिक्स. Okay, great, great. Yes. बहुत सिंपल वर्ड में मैं समझा रहा हूं. ये जो आप कोरिलेशन एस्टेब्लिश करके जो लॉजिक लगा के इस चीज को एनालाइज करते हो, उसको एनालिटिक्स कहा जाता है. सिंपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. Right? And that is the reason Jack Fitzen basically says that analytics is a mental framework, a logical progression first and set of statistical tools second. तो ये हमको अगर पता चल गया तो बाद में उसमें कितना एवरेज है, उसका मीन कितना बैठ रहा है, उसका मीडियन कितना बैठ रहा है, एवरेज वैल्यू प्रोडक्शन का कितना बन रहा है, उसमें से हम क्या कोरिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल सेकेंडरी थिंग. वो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने की बात है. I hope you guys are clear on this thing now. Yes, it is pretty clear here. Right? Okay. So now let's see how HR function has evolved over a period of time. Right? So it started with basic needs. अगर आपने आपके MBA के सेशंस में या MLW HRD आपने जो भी किया होगा, वहां पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट 6 मंथ में आपको ये टॉपिक्स आए होंगे. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब था HR में. Yes. Yeah. Right? So just get back yourself in that area, and from that point of view, have a look at it, at this slide. Right? So it basically started with HR processes, payroll, admin record, कौन बंदा आया, कौन बंदा गया, सिक्योरिटी वाले ने उसका हिसाब किताब कर लिया, महीने में पगार दे दिया, बात खत्म हो गई. Right? Then it became a kind-hearted support function. राइट भाई, उनको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी दो, थोड़ा सोशल सिक्योरिटी भी दो, थोड़े टॉयलेट्स भी दो अच्छे. लेट्स हैव गुड हाउसकीपिंग इन ऑफिस एज वेल एज इन प्लांट. राइट? देन इट मूव टू इंटरनल कंट्रोल्स. मैन पावर बढ़ रहा है, लेट्स कंट्रोल द हेड काउंट, इंक्रीज द हायरिंग और डिक्रीज द हायरिंग, लेट्स डू सम रीस्ट्रक्चरिंग, गिव मी सम रिपोर्ट्स, let's design some MIS reports, let's design some policies, let's design some code of basic discipline in the plant. Right? And from there it moved to proactive. अब तक जितना भी था वो सब रिएक्टिव था. बाद में आया 2000, when the globalization concept started. Right? Let's focus on customer needs. Let's take a proactive approach. Let's do some process improvement. This was during 1980s. Let's do some succession planning, performance management. Right? And then business partnership role given by Dave Aldrich during his work with Jack Welch in transformation of GE. Right? We started talking about intellectual capital, workforce empowerment. We started talking about cost benefit analysis, return on investments, right? And where from here, where it is moving?
how we can make organizations more competitive, the consolidated role. Total line managers accountability. अभी क्या हो रहा है? अभी अगर कोई एचआर प्रॉब्लम, यानी कोई बंदे का प्रॉब्लम आ गया, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आ गया, तो सीधा एचआर के पास भेज देते हैं. बट नाउ कंपनीज हैव स्टॉप डूइंग दैट थिंग. It is the business managers who are at front line. They need to take care of their people problem. And HR will act as an internal consultant. And HR will provide your long-term vision and strategy. Now just take 5 to 10 seconds on this slide and see where you are working. वो organization कौन से level पे है अभी? So you are at kind heart support or internal control or rapid growth, or you are at business partner role, right? Because if your organization is at any point, right, the competence required for HR for delivering these roles will be little bit different. Got it? And just introspect yourself, that have you evolved your competence or skill sets accordingly? Or say from your current role, if you're working in an organization which is at say internal control, right? And हमने करियर डेवलपमेंट प्लान बना लिया कि अगले 5 साल में मैं कोई बड़ी मल्टीनेशनल में काम करूंगा. नाउ दिस एमएनसीज आर एटलीस्ट एट सम बिजनेस पार्टनरिंग रोल and integrated. So along, if you are aiming to go into a multinational company, your skill set should be also matching to that MNC's requirement. Right? So guys, now data is heart of analytics. So what is data? Collection of information. Collection of information, okay. Right? So we get collection of information in a structured format. Okay, in a structured format. Right? So data is collection of facts such as numbers, words, measurements, observations, right? And there are two types of data. One is qualitative data and one is the quantitative data. अभी एचआर में ये हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है. हमारे पास तो एचआर का तो पूरा क्वालिटेटिव डेटा है. हम क्वांटिटेटिव डेटा कहां से लेके आएंगे एनालिसिस के लिए? होता है कि नहीं हमको ये चैलेंज? So we will look Yes, into but it. but through surveys, the secondary data can be means we can just have it. Yeah, means even you can have primary data also. Yes. The caveat is Different. basically you should know how to do it. Yes. अरे कभी कभी दिशा क्या हो जाता है कि कई बार हम कुछ कई चीजें ऐसी मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? बट कहीं ना कहीं हमको ये पता होता है कि शायद ये चीज मुझे करते नहीं आती, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, या इसलिए मैं ये स्टैंड ले रहा हूं पर्टिकुलरली. करेक्ट? So there are basically 5 V's of data. One is volume, one is variety, one is velocity, variability, and value. Right? So what Arun mentioned, the structured data. That structured data basically gives you the value. So it should be in enough volume. आपका पॉपुलेशन इतना बड़ा होना चाहिए कि आप सैम्पलिंग कर सको ठीक से. So guys, have you heard of these words, population and sampling? Yes, sir. Samsung. MBA में पढ़ा होगा.
ऑपरेशनल रिसर्च या रिसर्च मेथोडोलॉजी था सब्जेक्ट? Yes. उसमें पढ़ा था पॉपुलेशन सैम्पलिंग, Yes. टाइप ऑफ सैम्पलिंग्स, Yes. Yes. है ना? वो याद है कि फिर the problem is that once we get degree, we forget books. एक्चुअली आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, उसके बाद वो किताबें एमबीए की पढ़ना वापस शुरू करो, आपको उन किताबों में से एक अलग इंसाइट मिलेगी. So if you read the same book, if you have one book, and if you read it at 2 years of experience, 5 years of experience, 8 years of experience, 12 years of experience, and 15 years of experience, at each reading, during each reading, your interpretation and understanding of that book will be different. Because your experience is basically interpreting the book now. I hope this thing is clear to all. Yes, yes, it is very clear. Guys, let me know if I'm going too fast or too slow, or if you feel I'm talking some boring things, then let me know. No, no, it is absolutely correct, sir. It's absolutely correct. Absolutely correct. Please go ahead. Sorry? It's all good. Okay, yeah. Right. So, yes, Gayatri, we were discussing about difference between analysis and analytics. Yes, sir. Guys, any idea about क्या difference हो सकता है? I think the process is, if I like talking about the analysis, the total data evaluation process that is called analysis, and of the predictive things, and after the total solution and all the things that is included in the analytics. Okay. See, basically, मैथ्स में हमने 5th-6th चैप्टर में, मैथ्स के 5th-6th स्टैंडर्ड में हमने मैथ्स में पढ़ा होगा. आर यू अवेयर ऑफ सेट एंड सुपरसेट्स, सबसेट्स? है ना? So understand this way. See, basically, analytics is the superset, and analysis is basically the subset. Okay. So the primary difference between analytics and analysis is the matter of scale. So data analytics is broader and data analysis is subcomponent. Okay. And second main difference is analysis is passive, past focused. क्या हो गया हम उसका analysis करते हैं. Whereas analytics is basically more dynamic and future focused. कि क्या हो सकता है, या इसको किस तरह से किया जा सकता है, या क्या possibilities we can create. So that is analytics. The forecasting. Yes. So the MIS report that you are currently making is you are doing the analysis part. अभी एब्सेंटिज्म आपके पास आ गया फिगर कि हमने अभी एब्सेंटिज्म और ओवरटाइम का बात किया था, तो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. Right, in your MIS report, Arun got report that absenteeism is 18%. Correct? Yes, So sir. now you have got the data, you have analyzed, and you have found that it is 18%. So this is basically descriptive analytics. Correct? Can you please come again? So Arun got in a MIS report, he is consulting one of the manufacturing organization, and the HR has reported at the month end in April, from 1st April to 30th April, the absenteeism is 18%. Okay. So this is basically descriptive analytics. You are looking in the data which has already been
executed or which already has been done, वो हो चुका है past में. So this is descriptive analytics, right? Then what you do is that then Arun says, yeah, okay, tell me one thing, why this absenteeism is happening 18%? Give me the reasons. People are not coming on time. How many of them have been marked half day? How many of them are facing health issues? How many of them are facing transport issues? Right? So now what Arun is doing is basically he is doing a diagnostic analytics. Right? So first is the descriptive analytics and then you have diagnostic analytics. Now Arun thinks that how in first quarter we have started with 18%. So in next quarter, if average remains 18%, how can I reduce this absenteeism to say 16% now? Or say attrition I am getting 18%, how do I reduce that attrition to 16%? What should I do so that it comes down to 18% or say 16% from 18%? This is you are moving into predictive analytics. Right? And then you think that I should do in this intervention. Let's have a health checkup camp for our employees. And let's execute this health checkup camp. Let's find out what is the problem and why people are having this problem in our organization. So this is basically you are entering into prescriptive analytics. So there are 4 types of analytics. Descriptive analytics, which is more of an information, which tells you what happened. Then you get insights out of it. You enter into diagnostic analytics. Why did it happen? Then based on the current trend, what will happen? You are entering into predictive analytics. And then how can we make it happen from 18% to 16%? You are getting into foresightedness. And that is what basically is the prescriptive analytics. So fundamentally 4 types of analytics: descriptive analytics, diagnostic analytics, prescriptive analytics, and predictive analytics. Are you guys clear on this concept? Yes, yes. Yes. Good clarity. Yes, very good clarity. Right? अभी भूलना मत जिंदगी भर ये. नहीं भूलेंगे सर, टेंशन मत लो. Right? So analytics is basically not so much about the numbers as it to do with logic and reasoning, right? So अब तक आपको पता चल गया होगा कि आप अपना क्या दिमाग लगाओगे उसके लिए. तो नंबर्स के बारे में नहीं है, आप अपना जो लॉजिक लगाते हो ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. राइट? So it's an aptitude. Correct? Can we say analytics is an aptitude? Yes. Right? And if it is an aptitude, it can be developed. Yes. Correct? Right? So analytics basically requires use of carefully constructed metrics. So what is a metric now? आप सब लोग मॉनिटर करते होंगे, सब लोग HR MIS रिपोर्ट्स बनाते होंगे, उसमें मैट्रिक्स मॉनिटर करते होंगे. व्हाट इज अ मैट्रिक? It is a correlational information. Correct. So it's data which conveys meaning. Yeah. Right? And most important thing is ability to use any software is not HR analytics. मैं पाइथन भी सीख लूंगा, मैं टेबल्यू भी सीख लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं पावर BI भी सीख लूंगा.
These are all processing and data visualization tools. Nothing more than that. Okay, tell me one thing. Have you guys used a calculator? Yes, sir. Right? चेक कैसे करते हो कैलकुलेटर सही है या नहीं? By entering in it 2 plus 2 is equal to 4. And if you get Yes. answer 4, then you say that yes, this calculator is good, it is working well. Right? Hmm. है कि नहीं? Yes, sir. But now to check whether that calculator is correct or not, don't you think that you should have fundamental knowledge that 2 plus 2 is equal to 4? आपको भी तो पता होना चाहिए ना? Yes. कैलकुलेटर सिर्फ उतना काम करेगा कि आपका प्रोसेस फास्ट कर देगा. ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है. But why softwares and machines are used? They are used to process the information which is not humanly possible. Hmm. Correct. So it is not that it is not humanly possible, but it is too much time consuming. Correct. Right. So the core of any HR analytics is हाँ yes. So last point पे ये मैं point यही ड्राइव कर रहा था कि आपको सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. सॉफ्टवेयर आ जाने से HR एनालिटिक्स आ जाएगा ये जरूरी नहीं है. बट HR एनालिटिक्स अगर आ रहा है, आपको आता है, तो सॉफ्टवेयर आपका काम आसान कर देगा. डिफरेंस उतना ही है सॉफ्टवेयर का. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर नाउ. सो डोंट रन बिहाइंड सॉफ्टवेयर्स. Very correct. Very correct. Correct. Now, few of the last week only, I was discussing with some person who was interested in the HR analytics program, and he said कि सर मैं पाइथन सीख लूं. मतलब पाइथन सीख के क्या करोगे? तो बोलते सर उससे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है. मैंने बोला और कौन बताता है उसको पाइथन को? मैंने प्रोग्रामिंग कौन करता है पाइथन का? तो बोलते सर हम लोग ही करते. तो मतलब रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह से यूज करते हैं वो तो तुमको पहले आना चाहिए ना, तभी जाके पाइथन को लॉजिक दोगे. So if you want to enter into predictive analytics, you first need to understand regression analysis. And then when regression analysis is consuming too much of your time, you automate that process by entering a code in Python, which will basically process the information. And machine learning and artificial intelligence are basically designed on Python. Python is the most compatible language with these concepts of AI and machine learning. Right? So guys, don't run behind this thing. Get your fundamentals clear. Then everything will fall in place. Right? So metrics is, as Arun said, the data that conveys meaning. Right? So employee turnover is 18%. Or absenteeism is 18%. This is data. But when I say there is a 4% rise in attrition this year, then it is a metric. Because I am comparing it with last year. Now I see there is a 4% rise, there is an upward trend. Correct.
And when I say inappropriate leadership style of a selected manager in particular department has resulted into higher attrition of 4% on year comparable basis, then it is analytics. होगा, आपने ऐसे बहुत मैनेजर्स देखे होंगे अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसे सुपरवाइजर्स होंगे जिनके अंडर में वो वर्कर्स काम ही नहीं करना चाहते। Have you come across this kind of people? Yes, definitely, sir. Right. So now, this gives us a clear understanding of what is data, what is metric, and what is analytics. Are we clear on this? Yes. Yes, yes, yes. What about others? Yes. Right. So shall we move ahead now? Please, yes, yes. There are some myths associated with this skill set, right? That I require a strong statistical aptitude. आपको चाहिए सिर्फ 8, 9, 10th का मैथ्स अगर ठीक से किया हुआ है आपने, सफिशिएंट है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर कर लेगा, राइट? सेकेंड थिंग इज इट बिगिंस विद डैशबोर्ड्स। मैं डैशबोर्ड्स बना दूंगी, मैनेजमेंट को बता दूंगी, ऐसे नहीं होता। इट्स बेसिकली एंड इन विजुअलाइजेशन। जो मैंने हमने डैशबोर्ड शेयर किया था ना अपने ग्रुप में, so basically dashboards are used to analyze what is there and what can be done, right? सेकेंड थिंग इज दैट हमारा एक परसेप्शन रहता है कि हमको बहुत सारा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा एचआर एनालिटिक्स में। इट इज नॉट what load of data that you capture, it is the appropriateness of data that is required, right? Fourth is it consumes lots of time. If you are analyzing or monitoring correct metrics, एक बार कर लोगे उसके बाद ऑटोमेटेड प्रोसेस चलता रहेगा, राइट? एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट, नॉट ऑफ एचआर जर्नलिस्ट। आजकल ये स्किल्स सबके लिए रिक्वायर्ड है, whether you are into training, whether you are into recruitment, whether you are into operations, everywhere, right? Now let's take into a real-time application, right? So there was a company which was having some problems in recruitment process, right? So the problem statement was, this is one of the major problem statement, means सबके problem आते ही रहते हैं। HR is not providing right people on right time, correct? How many of you have faced this problem? Your line managers are not happy? Almost everywhere? Yes, everyone, almost. Right? So we use methodology of say design thinking, lean principles, HR analytics, थोड़े बहुत tools of Six Sigma, correct? And we try to improve the process. Right? Sir, I have one question. Yeah. If we are just using design thinking framework, it is applicable only for the recruitment process or anywhere we can just use it?
You can use So it. I'm not being clear with design thinking at in detail, in depth, if I just can say. See, basically, design thinking is a process of innovation, right? For example, if you want to improve something, then you will take design thinking principles. These principles basically talk about कि भाई कोई प्रोडक्ट में किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उनके कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आई है, कहाँ से आई है, कौन से प्रोसेस से आई है प्रॉब्लम्स, कौन से प्रोडक्ट के पार्ट से आई है प्रॉब्लम. करेक्ट. सी नाउ, Okay. so now let me think of one product which has evolved over a period of time. Say for example, take simple razors. Correct. सो पहले के रेजर्स के ब्लेड्स तुमको पता होंगे, शायद देखे होंगे. तो टोपाज करके एक पुराना आता था, मे बी हमारे फादर्स यूज करते थे फॉर शेविंग. करेक्ट. या हमारे दादाजी को देखा होगा आप लोगों ने उस तरह के रेजर्स यूज करते हुए. वो बेसिकली खोलते थे, पूरा मेटल का होता था स्ट्रक्चर, फिर उसमें ब्लेड डालने का, फिर उसको बंद करने का, फिर उसको क्लोज करके उससे शेव करने का. राइट. हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ रेजर्स? Yeah. Right. And now we are having 3-blade razors designed by Gillette, which gives you a very smooth experience of shaving. Now the journey of that old-fashioned razors to Mach 3 kind of razors by Gillette, that is a product of design thinking. Are you clear, Disha? Yes, yes. Right. So Now it is basically being it's an innovation process. So innovation can be applied to anywhere. So अगर okay. आपको डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स पता है तो आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भी लगा लो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस पे भी लगा लो, एचआर के प्रोसेस पे लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे लगा लो. Okay. Yes. Now it is being clear to me. Got it? Yeah. Okay. So Siddhi is sharing. There are 5 steps of design thinking. Yes, empathize, define, ideate, prototype, and test. Correct. Right. So we use that कि भाई रिक्रूटमेंट, अभी क्या है कि रिक्रूटमेंट में भी आपको प्रोसेस मैपिंग करना पड़ता है. राइट. यहाँ पे लीन प्रिंसिपल्स, अभी प्रोसेस मैपिंग करना हो आपको लीन मैनेजमेंट आना चाहिए. लीन प्रिंसिपल्स. लीन इज बेसिकली a concept where you see that which process is adding value to the end result and which is not adding value. That is VA and NVA processes, value addition process and non-value addition process. So non-value addition process को मैं हटा सकता हूँ क्यों कि क्या. Now in recruitment, if you see, right, now Disha, you yourself is a consultant, correct, and you are doing Yes. recruitment services. Yes. Correct. Now let's take this recruitment as an example. First is that you might be sending 10 resumes to a particular organization, Okay. Yes. right, and you are getting shortlisting after 8 days. होता है कभी कभी. Yes. Right. So now these 8, if I am trying to monitor time to hire, Yeah. this manager is basically adding 8 days to your time to hire this thing. Correct. Yeah. A job which can easily be done in 24 hours or say maximum 48 hours. A job or task which can be done in 1 day is taking at 8 days, and it ultimately it is adding 7 days extra to your turnaround time. And if I am CHRO or general manager or vice president of
organization in which you are working, and if I am seeing this thing, I am not going to tolerate this thing. I will ask a straightforward question. दिशा, ये 8-7 दिन एडिशनल क्यों लग रहे हैं? अभी आपको जरूरत है, दिशा, एचआर के प्रोसेस में डालो कि इसका 24 घंटे में इसका निकाल हो जाना चाहिए. Correct. Yeah. Right? If that manager is taking more than 24 hours to shortlist resumes, then he should give a written explanation that why these things got delayed. And that delay will be attributed in turnaround time or time to hire metrics to the particular department and not HR department. Now, this comes out when you understand what is lean principles. So you do process mapping, you see where value is added, which process is not adding value. I will show you this example. आज हम उस पर चर्चा करते हैं अभी बैठ के फुर्सत से. अभी so न्यू आउटकम्स में प्रोसेस काफी इंप्रूव हुआ. Right? Non-value adding activities were removed, cycle time was reduced, and it was more consistent. Process capabilities improve hui. Right? So if you see the previous data, right, this was the recruitment cycle time for particular positions. उनके पास आईटी कंपनी थी, गिनी चुनी पोजीशंस थी, डेवलपर ज्यादा हायर करते थे. राइट? तो हमने क्या किया, उसका वेरिएंस निकाला, वेरिएंस पे से, और फिर उसका मीन भी निकाला. राइट? और मीन निकालने के बाद हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला. राइट? एंड देन वी यूज्ड फॉर्मूला ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी. सो यू हैव अपर limit and you have lower limit. Correct? So 45 दिन होते हैं नॉर्मली कि 45 दिन में पोजीशन क्लोज हो जानी चाहिए. राइट दिशा? Yes. राइट? और मिनिमम आपको कम से कम आपको 25-30 दिन तो लगेगा उसको क्लोज करने में. Mhm. राइट? Right, sir. Right? So my upper limit was defined, my lower limit was defined. I was having standard deviation which I got from the recruitment cycle time data. Right? Now if I want to measure process capability, right? So process We capability, get this upper limit and lower limit from how we just find it out. normally it is defined in your policy, na? Yeah, but what is the there is something, no, the measurement which we are just taking, that this is a upper scale limit which we are just going to take. Max and mean it is basically, right? Sorry? It is a max and mean. No, it is not max and mean. It is basically कि आप एक अपनी कंपनी में पोजीशन कितने दिन में क्लोज करोगे. So normally हम 45 days लेते हैं. लेकिन सर ये हम पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं? आई जस्ट वांट टू नो द कैलकुलेशन पार्ट. पैरामीटर्स देखो क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है. ओके. But for 30 and 45 days is a standard practice which you take into consideration. Otherwise इसका एक्चुअल अगर निकालना हो तो पिछले 3 साल का आपका एवरेज साइकिल टाइम निकालिए. ओके. राइट? और उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम आपने कितने दिन में किया है. अभी हो सकता है कि ये 45 डेज बेंचमार्क हो या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हो, लेकिन हो सकता है आपकी पोजीशंस बहुत क्रिटिकल हो. फॉर एग्जांपल से रिसर्च साइंटिस्ट 45 डेज में गारंटी के साथ बोलता हूं नहीं मिलेगा. करेक्ट. निश प्रोफाइल है, दैट्स राइट. निश प्रोफाइल है. राइट? हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाए. तो दीज आर नोन एज डेटा आउटलायर्स. करेक्ट. करेक्ट? तो हमको क्या करना है बेसिकली कि कितना डेटा आपके बेल कर्व के अंदर पड़ता है, उसका मैक्स और मिनिमम लेके चलना है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना है. हो सकता है कि आपके लिए 30 मैक्सिमम हो. अभी आपको अगर क्लोज करना है पोजीशन आईटीआई अप्रेंटिस का,
तो वो तो 15 दिन में भी हो जाएगा, उसके लिए 45 दिन रुकने की जरूरत नहीं है, Hmm. है कि नहीं? Yes. तो उस पोजीशन के लिए आपका मिनिमम होगा 1 वीक 7 डेज और मैक्सिमम होगा 2 वीक्स, दैट इज 14 डेज, Correct, sir. right? But then overall, if we take an organizational reference value, then the standard practice is of 30 days and 45 days. Correct, sir. Okay. Yeah. So when we talk about process capability, it gives us basically ki how much the process is capable to deliver. Correct. So the CP value can be calculated from upper limit minus lower limit divided by 6 standard deviations. सो प्रीवियसली जब हमने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तब हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया, तब ये 0.21 सीपी वैल्यू आता था इसका, कि प्रोसेस कैपेबिलिटी 0.21 है, उतना नॉट दैट मच ग्रेट. देन वी अप्लाइड डिजाइन थिंकिंग प्रिंसिपल्स, लीन मैनेजमेंट, कौन से प्रोसेसेस हटाने चाहिए, कौन से रिक्रूटमेंट मेथोडोलॉजीज यूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, क्या काम कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पिछले हमारा एक्सपीरियंस था उसमें कुछ चीजें काम कर गई तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगी, है कि नहीं? Right? And for 6 months we did this, and then afterwards we calculated the results. Right? So the variance reduced, the mean also reduced, the standard deviation also reduced. Its standard deviation reduced from 11.83 to 3.63. और जब हमने वापस उसकी प्रोसेस, जब नए प्रोसेस की कैपेबिलिटी चेक की तो इज इंप्रूव फ्रॉम 0.22 टू 0.68. राइट? एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा प्रोसेस कितना इंप्रूव हुआ है. And this is how statistically you can prove that how you have improved the process. So अगर इसका 6 सिग्मा वैल्यू निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं अभी प्रोसेस का. Let me show you how to do that. राइट? अभी आपको लगता होगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कॉम्प्लेक्स होगा. कुछ नहीं है. राइट? ये मेरा टेट था, टर्न अराउंड टाइम. सॉरी, शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी मेरी. Is it visible? Yes. Right. So what was my TAT, my turnaround time? This was my previous turnaround time. Right. And then what I did was I took the variance. Right. तो हमको वेरिएंस अगर निकालना है तो एक्सेल में फॉर्मूला है वेरिएंस, VAR डॉट P and S. So P is for population and S is for sample. Remember this thing. राइट? तो अगर हमको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी पोजीशंस थी हमने सबका पॉपुलेशन लेना है, या हमको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पॉपुलेशन लेना है, सैंपल लेना है. राइट? सो व्हेन यू आर working on all the positions in the organization, then you should take VARP, that is population. और अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ले रहे हो तो VARS लेना है, दैट इज फॉर सैंपल. Are you clear on this thing, guys? Yes, catching up a bit, but yes. So हम करेंगे VARP. अगर मेरे को इसका वेरिएंस निकालना है तो मैं सिंपल डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं. राइट? और ये एंटर कर देता हूं, 127.05 आ गया. अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला है STDEV. स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का भी है और सैंपल का है, सेम प्रिंसिपल. ठीक है?
तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया 11.27। सर यहाँ पे आपने एस नहीं लिया सैम्पलिंग कहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन में। अरे वो भी करके बता देता हूँ। ये तो मेरा पूरा पॉपुलेशन ही था ना, इसलिए मैंने पूरा ले लिया था। ओके देखो सैम्पलिंग और उसमें फर्क आया ना वैल्यूज में। यस सो सैम्पलिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। अगर करेक्ट। पूरे डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लेने जाओगे तो 150 शायद आएगा, और उसका सैंपल करने जाओगे तो शायद 26 ही पोजीशंस होंगी जो आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हो। ओके नहीं राइट। सर, आपने इसमें जैसे वेरिएंस का तो आपने सैम्पलिंग में कैलकुलेट किया, but in the standard deviation we are taking in the population. Just want to understand the difference, why it is being. कहाँ वेरिएंस का पॉपुलेशन में किया है, सैंपल में नहीं किया है? सैंपल में किया था ना। वो तो तुमको बताने के लिए। अच्छा पॉपुलेशन में। ये पॉपुलेशन है अच्छा एसटीडी मैं सैम्पलिंग समझ रही थी। नहीं नहीं, ओके ओके गॉट सैम्पलिंग तो इट। बाद में बताया मैंने, 0.82 आया जिसका 11.82। करेक्ट करेक्ट Okay, so now I have basically now here also remember one thing, if you square root, if you take out the square root of variance you will get what? Standard deviation. So इसके लिए मैं स्क्वायर रूट SQRT फॉर्मूला है सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस अगर निकालता हूं तो 11.27199 आ गया है ना। Right, so now what I have, CP formula, upper limit minus lower limit divided by 6 standard deviation. So मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या है फॉर्मूला? 45 माइनस 30 दैट इज 15। मेरा 6 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 6 इंटू दिस 11.27, लेट मी शो इट ओवर हियर, राइट। सो मेरा 0.22 आ गया मेरा सीपी लेवल, राइट। अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी को अगर आपको सिग्मा लेवल पे कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे मुझे ये प्रोसेस था वो 1.33 सिग्मा पे था, लेकिन अगर मैं उसको 1.33 सिग्मा इज बेसिकली स्टैंडर्डाइज वैल्यू, द मोस्ट आइडियल प्रोसेस यू कैन से, बट देन आइडियल प्रोसेस तो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होता नहीं है ना, बिकॉज देन देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बाय ह्यूमंस, बाय सिस्टम, बाय टेक्नोलॉजी, सो यू हैव टू करेक्ट इट। So corrected 6 sigma level is basically minus 1.5 करना पड़ता है हमको, तो 1.33 माइनस 1.5 किया हमने तो माइनस 0.169 सिग्मा का लेवल आया। और द सेम थिंग हमने 6 महीने के बाद जब वैल्यू मेजर की, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसका प्रोसेस निकाला, उसका सीपी वैल्यू निकाला, तो सिग्मा लेवल था 4.112। सो नाउ ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमने क्या किया बेसिकली वी कहाँ गया, so we audited the entire system, right? So we conducted this recruitment audit on various parameters. What is their understanding of the job to be filled, how they are tapping sources of recruitment, how they are able to attract and shortlist candidates, what are the different strategies and approaching for selections, what is their, how they are setting up selection process, what is their final selection process,
व्हाट आर द टाइमलीनेस टू एंटायर प्रोसेस, कितना एडर कर रहे हैं, कोई कितना टाइम हो रहा है उतने में। तो ये बेसिकली 7 डायमेंशंस पे उसका ऑडिट किया, और उसको ऑडिट करने के बाद हमको एक स्कोर मिला, एंड द इफेक्ट द मैच्योरिटी लेवल ऑफ दिस प्रोसेस वाज 56%। सो अभी मुझे गैप एनालिसिस तो मिल गया। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग मी। Now it is getting little difficult to grasp, but yes, we have to go on. राइट, सी अरुण, हमने क्या किया है, हमने बेसिकली इतना ही किया है कि जो भी प्रोसेस था उसको हमने ऑडिट किया Correct. और गैप एनालिसिस निकाला। ओके, अभी गैप एनालिसिस निकालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे रीडिजाइन करना है नया प्रोसेस। अब गैप्स, जब गैप मैंने निकाले हैं तो उसका फिल तो करना पड़ेगा ना। Correct, correct. राइट, सो नाउ what we used was, what should be the process map for this recruitment and selection. So we adopted a new process map कि this will be the ideal process. अब ये प्रोसेस मैप को भी समझना एक स्किल सेट है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू दैट दिस वाज द शुड बी प्रोसेस, कि कैसे एक्चुअली होना चाहिए। राइट, और फिर जब इस प्रोसेस को उसमें इंप्रोवाइज करके उसकी ऑडिट में हमने निकाला, और फिर जब फिर से ऑडिट किया, तब जाके हमको ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ये रिजल्ट्स मिले। So in nutshell, what we did, we took the process, we did the value stream mapping, हमने उसमें से नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज निकाल दी, जो बॉटलनेक्स थी वो निकाल दी, और एक नया प्रोसेस बनाया और उनको बोला कि अब इसको फॉलो करो। और उसको फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आए, तो ये हमारे प्रोसेस कैपेबिलिटी हमारी 0.22 से बढ़ के 0.68 हो गई। आर वी क्लियर ऑन दिस? आई एम जस्ट आस्किंग यू conceptually. So now in my organization, when I was working with Panasonic, right, my recruiters were judged on what is the Six Sigma level they are maintaining in the process. That was their KPI. Number of positions कितनी close करी, that was not critical. प्रोसेस एडहेरेंस हो रहा है कि नहीं, सिस्टम से चल रहे हैं कि नहीं लोग, प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। My focus was on that. And so the team was working on the similar grounds. So if you want, you can go at this level of depth in all the HR functions you want. ऐसा ही आप पेरोल के लिए कर सकते हो, अटेंडेंस सिस्टम के लिए कर सकते हो, आपके एचआर ऑपरेशंस के लिए कर सकते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। So if you see this file, right, I have audit systems for manpower planning audit किस तरह से करना है, ये तुम्हारा पीएमएस का ऑडिट किस तरह से करना है, तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ऑडिट किस तरह से करना है, कितने डायमेंशंस पे करना है, और उनको इंप्रूव करने के लिए आपके पास कितने प्रोसेसेस है, कितने बेंचमार्क प्रोसेसेस है। राइट,
So this is the process map, should be process map for manpower planning. This is for recruitment. This is for employee performance. So the idea is basically you take up your existing process, you audit it, you find out the gaps, you fill up those gaps and implement a new process. And then after this, what you need to do is बेसिकली हमारा ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया, तो प्रोसेस इंप्रूव होने के बाद हमको वो सही से मैट्रिक्स कैच करके देगा, करेक्ट? It will help me to capture correct metrics then? Yes or no? Hello? Am I audible, guys? Yes, yes, sir. नहीं, कोई कुछ बोल नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं. So once your process is fixed, it will be able to capture metrics. Correct? So which metrics I will capture? Time to fill, time to hire, source of hire, first year attrition, quality of hire, hiring manager selection ratio satisfaction, candidate job satisfaction. Likewise, I will monitor 17, 19, 20 odd matrices. Correct? And then from this matrices, what I will do is I will try to create strategic themes. Correct? So what strategic themes I can create? Hiring efficiency and workforce readiness. So that will be my one theme. So I will create a dashboard with this strategic theme, which would include time to fill, time to hire, percentage open position, time to productivity, and recruitment funnel effectiveness. Then my second strategic theme can be quality of hire and retention. Third will be cost optimization. Fourth will be candidate experience. और इस पे से फिर मैं डैशबोर्ड्स बनाऊंगा. Right. See, I will show you some dashboards in action. तो फिर बेसिकली डैशबोर्ड्स बनेंगे. और ये वही डैशबोर्ड थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. So these are the dashboards that I will prepare from the matrices that I'm monitoring. And once I am able to do that, then I will see that what kind of HR interventions can be designed.
And the source of metrics will tell me that whether this is HR intervention or an OD intervention. Right? So if the source of metrics is basically my business model, business strategy, business parameters, business KPIs, then the intervention which I designed to resolve this business problem, it will become an OD intervention, that is organizational development intervention. And this is where my role as a strategic HR business partner will come into picture. सो ये डैशबोर्ड के इनसाइट्स पे से आप फिर इंटरवेंशन डिजाइन करना शुरू करोगे. Right? So for me, this is what actual HR analytics should be. If you're not operating at this level, then I would say that you are working in HR, but you are working at a very superficial level. At the same time, the concern is management should also allow you to get into doing all this. Who stops you? They will change the priority, you know. See, this is Arun, this is, to be very honest, this is an excuse. ये पूरा HR मैट्रिक्स का डेटा आप लोगों के पास है. अगर भले ही मैनेजमेंट करने देती है, नहीं करने देती, लेकिन आप अपने डेवलपमेंट के लिए तो साइड पे ये प्रोजेक्ट कर सकते हो ना, हफ्ते में 2 घंटा निकाल के. Yeah, that is very true. राइट? अभी जस्ट इमेजिन करो, ये स्किल सेट्स डेवलप नहीं किया और तुमने कोई ऐसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम ले लिया जिससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो बोलेगी कि ये करके दो, तब क्या करोगे फिर? And that's why I'm here. Right? So it is not only in consulting, but I would say it is with employees also, those who are working in HR. Right? We always come up with such excuses कि मैनेजमेंट हमको करने नहीं देती, मैनेजमेंट ये नहीं करने. अरे उसका आरओए, उसका बेनिफिट बताओ कि ये आप कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो. कौन सा डायरेक्टर है वो जिसका फायदा होता होगा वो बोलेगा कि नहीं, फायदे का काम मत करो, मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे को नुकसान ही चाहिए? Will anybody tell you? Any director will tell you this thing, any founder will tell you that, dear HR, please only do those jobs which are not beneficial for the organization. I am sure nobody will tell you. हाँ, आप ये करके उसको बता दो कि ऐसे बेनिफिट हो सकता है. अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नुकसान उसका ही है. तुमने तो नॉलेज अप्लाई कर दिया ना अपना. See guys, I Very tell true. you, I share my experience with you, right? Whenever you say that, whenever I get these kind of questions, that management करना ही नहीं देता, right? In 2004 and 2005, I was working with Adani's, right? And our quality head came up with a program कि सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन बोलते हैं मुझे करना है. तो मैंने देखा, मैंने बोला ये तो अच्छा है, मतलब मुझे भी करना है. तो इसे तुम करके क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं HR में अप्लाई करूंगा. तो बोलते ठीक है, बोलते साहब से पूछ लेते. सो we went to Dr. Malay Madevia. He was our CEO in Adani. Right? And I asked him that, sir, I want to do this. So bolte hai ki Nitesh, where you will apply this thing? And obviously, I will apply in HR and it will help us to improve our process at least. So okay, then go it and do it and show me what you have done. Then this is the kind of project I submitted him 20 years back when I did my Six Sigma project. And the same thing helped me when I joined Panasonic.
Now, these Japanese directors were also surprised to see that an HR person has already is having knowledge of Six Sigma. And he is able to do the improvement projects. And for them, basically, Six Sigma and lean management is way of life. It is into their day-to-day operations. So, Arun, you never know when things will get clicked. और वो कब हुआ? मैंने Six Sigma किया था 2005 में और मैंने Panasonic ज्वाइन किया 2009 में. And we met in after COVID. Huh? We met personally after COVID. Yes. Baroda, if you remember. Correct. तो ये चलता रहता है, ये नॉलेज कहीं पे भी जाएगा नहीं. Very true, very true. तुम इतना जस्ट इमेजिन कर लो ना अरुण कि अगर मैंने जितना स्क्रीन पे बताया आप लोगों को हाँ, उतना करते आ गया, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना ही नहीं देना, आप खुद का कितना डेवलपमेंट होगा ये सोच लो. very true, no doubt about that. Sir, I also agree with this because it is very much helpful where we can just give them the interventions, what initiatives they can take, the management can take the Exactly. decision. And as being a consultant, it is your job to do this thing. Yeah, and that is the value addition which the client wants. Yes. Correct. And If if they are not, I'm giving them money and what is the ROI? Back to that things, what the ROI I'm getting out of it. absolutely. And you send such reports, such sample reports to your clients, and you put these kind of dashboards on your website as a credentials. Your consulting will be blowing. No, very true, very true, very true. Sir, audit part It's not that like- we only have to formulate templates, everything. We are just only doing the auditing part also. Sorry? Recruitment audits, then manpower audits, then we only have to analyze and just we have to do the gap analysis and everything. We are only doing it. Means for organizations, from consulting point of view, you are asking me? No, as per the organization point of view. So as per organization, normally, Means as a HR, if I'm just being consulting also, or I'm just working in the company, for example, I'm just saying, then this is a recruitment auditing is being done by us only, right? yes, you charge for them, hefty. Yeah. और ये ना गाइस, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो छोटी मोटी कंसल्टिंग का नहीं है. This we were doing in 2004 when I worked with PricewaterhouseCoopers in Aditya Birla Group. और ये स्लाइड भी देखोगे ना, ये प्रोसेस मैप जो हमने डिजाइन किए थे, यू कैन सी 5 अप्रैल 2004, 21 साल पहले का है ये डॉक्यूमेंट. But the thing which we need to learn from this is how you are able to develop these process maps. The thing was that 21 years back, I was doing these things. And this is the reason. It means you get exposure to companies like, you get an opportunity to work with companies like Aditya Birla or Adani's or Panasonic. This knowledge base will take you to these kind of organizations. वरना तो कोई chance नहीं है. Sir, one more concern is the data collection. As a even yes, I can say in as a consultant that there are the companies are growing or 100, 200, 500 crore CR companies does not have those data collection point for HR. They might be having for their production or for other processes. हाँ, तो But that is for where HR, you as a consultant would come into picture first, na? So help them develop systems, then collect data, and then do their analytics, and then design interventions, and then execute.
So that is a big scope for your consulting. You should be happy for that. I know the scope is big. The scope is very big, no doubt. है कि नहीं? Very true. वो एग्जाम्पल पता है कि नहीं, साउथ अफ्रीका में बाटा कंपनी गई थी. हाँ वही, यहाँ तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता है. हाँ, तो एक बंदा आ गया वापस, दूसरा बोलता है सर यहाँ पे तो कोई चप्पल नहीं पहनता, बहुत स्कोप है काम करने का यहाँ पे. करेक्ट. अगर ये कंपनी सब डेटा कैप्चर करने लगेगी तो फिर तुम्हारा काम क्या रहेगा? तुम्हारा तो स्कोप में एक और असाइनमेंट जुड़ जाएगा ना. हम्म. दैट इज हाउ यू प्रोजेक्ट इट. Sorry, projected. Very true. Right. So, guys, this was all about analytics. What I think you should know, you people, HR should know at least. Right. There are more things to it, but I think we are already, how many? कितना time हुआ? Okay, पौने 10 में है. 40. So, do you want another session for this? So, my one question is that if do you take the only the HR part of all this, or you help to learn the technical part of Python and all those part also? Or what do you suggest that as a HR consultant, should I only understand the process part of it, not get into the software part of it? What is that is your Software part की जरूरत क्या है? मतलब वो पाइथन में वो डेटा कैसे डालना या उसको पावर बीआई में कैसे डालना? पावर वो बीआई का ये जो पावर बीआई है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो ये पावर बीआई का स्क्रीनशॉट है. आई अंडरस्टैंड. राइट, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये एक्चुअल फाइल है. हाँ हाँ, एक्चुअल फाइल. राइट, पावर बीआई की. ओके. राइट, तो ये वो डेटा हम कलेक्ट करके पावर बीआई में डालना हमको नहीं सीखना है, वो उसके लिए फिर वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ए डेटा साइंटिस्ट और डेटा ना एनालिटिक्स. कोई डेटा साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है. ये जो 21 मैट्रिक्स थी ना, हाँ ये देखो, ये साइड पे 21 मैट्रिक्स दिख रही है तुमको? करेक्ट. हाँ, ये देखो साइड पे डेटा मैं तुमको डेटा फॉर्म ही बता देता हूँ. टेबल व्यू, ये रही वो 21 मैट्रिक्स. राइट, ये एक्सेल का ही डेटा है जो हमने पुल आउट किया हुआ है. करेक्ट. ये एक्सेल का डेटा पावर बीआई में डाला, उसको क्लीन किया, उससे डैशबोर्ड्स बना लिए. अच्छा, तो दैट कौन सा आल्सो डेटा साइंटिस्ट और किसकी जरूरत नहीं है. ओके. राइट, अभी तुम बोलोगे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करने का है मेरे को. राइट, वेट अ मिनट, सी आई विल शो यू वन थिंग. मैंने एक अभी एक्सेल में ही किया था, रेजिग्नेशन प्रिडिक्शन, ओ प्रोबेबिलिटी. ये इसका एजेंट भी मैंने बना दिया था. राइट, आप रेजिग्नेशन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्टर, आप एक्सेल फाइल में अपना डेटा अपलोड करो, मॉडल को ट्रेन करो, बंदे का नाम डालो, वो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर देगा. वो फाइल मेरे शायद दूसरे लैपटॉप में होगी, यहाँ पे नहीं होगी. कोई नहीं, लेकिन I would have shown you that file where you enter the employee code or name, you will get the probability predictor. So you will be able to help us learn those 21 tables that you are showing that way, how to collect data, what to collect data, and then how to get those. ये हम अगर अगर आपको चाहिए और अगर
अगर एचआर एनालिटिक्स सीखना है, हम्म राइट? हम्म So I will give you recruitment audits, हम्म manpower audits, PMS audits, training and development audits. You will get entire actual process कैसे होने चाहिए, हम्म राइट? हम्म और ये एक्चुअल प्रोसेस की हर एक में आपको कौन सी मैट्रिक्स कैप्चर करनी है, हम्म राइट? ये रहा. Sir, can you showing the hiring efficiency, that one? Wait a minute, I will show you. Workforce, training, attrition. Attrition. और ये डैशबोर्ड भी तुमको अरुण रेडीमेड मिल जाएंगे. अच्छा, आप ये मैट्रिक्स में अपना डेटा डालो, तुम्हारे डेटा के हिसाब से ये पावर बीआई के डैशबोर्ड्स रेडीमेड मिल जाएंगे. तो आप सिखाएंगे, सिखाते हो आप? हाँ दिस यू टीच और योर? हाँ, मीन्स यू विल गेट this program where you can design Power BI dashboards. You will learn how to define metrics, how to design strategic themes for dashboards, how to design them in Power BI, and how to interpret them. और फिर once you have interpretation, from there you basically design interventions, and from interventions you execute those interventions using tools of analytics, Six Sigma, lean management and project management. So ये बहुत लंबा पाथ है. मेरे को उतना नहीं सीखना हो, खाली अपने को डैशबोर्ड बन जाए और क्लाइंट को एटलीस्ट वो डैशबोर्ड बना के भी दे तो भी आई थिंक अनदर 5 years में क्लाइंट विल नॉट आस्क मोर देन दैट. क्योंकि उसके आगे तो फिर वो फिर 1000 2000 5000 CR की कंपनी ही पूछती है, और उतना उनका काम करने के लिए फिर एक्सेल रह के बंदे होते हैं वहां नहीं, पे. देखो अरुण, कंसल्टिंग में ना हमेशा याद रखो या ध्यान रखो कि जो अगर 300 400 करोड़ की कंपनी है ना, उसके प्रोसेसेस 1000 2000 करोड़ की कंपनी के जैसे सेटअप करके दे दो, हम्म, तब जाके अपना वैल्यू एडिशन होता है ना. करेक्ट है. अदरवाइज तो फिर कोई बोलना चाहिए कि भाई अरुण आया, इसकी वजह से हमारा इतना इंप्रूवमेंट दिख रहा है. Okay, sir. Yeah, that is the reason why I'm still learning. तो ये अगर ये इस तरह का एचआर एनालिटिक्स और ये कर लिया पूरा, हम्म, तो आपको क्या correct. करना है फिर? नए क्लाइंट को तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू ही भेजना है. हम्म. अभी क्या है कि शादी एक बार करो या 7 बार करो, फेरे तो 7 ही घूमने हैं. हर बार. तो एक कंपनी में कंसल्टिंग करो या 4 कंपनी में कंसल्टिंग करो, प्रोसेस तो सेम ही है हर जगह. करेक्ट. सो यू डू इट वंस एंड रिपीट, वेरी ट्रू. राइट? और दोज हु ठीक आर है तो. वर्किंग एंड दोज हु आर नॉट इनटू कंसल्टिंग, फॉर देम आप एक एक जगह पे इंप्लीमेंट करो या 4 जगह पे इंप्लीमेंट करो, 4 कंपनी में, प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है. So how many of you want to deep dive into this? Yes, from my side. And for HR people, I will tell that I am an HR consultant, and I work with a lot of companies with 100 CR and all. And they're all I face all HR managers who have no, who face a lot of knowledge limitations. Can you guys believe that I am not an MBA HR, but still I am into strategic HR consulting? And at the moment, I have around 500 plus CR, 100 CR plus companies where they have an HR manager. Still, they are asking me, Arun, what to do. So Hmm. it is lack of fundamental understanding, not ready to learn next level is the key challenge that you guys are facing. Correct. I'm not. Anyways.
Okay, so guys, this was from my side. If you have any questions, if you want to know something, if you want any more information, I'm just sharing a link in chat over here, that if you want to book with a meeting with me, and if you want to take your career to next level, you can book a call with me, or at least get on a call. My phone number is already available in the group. I'll call you in by weekend, sir. Definitely. Yeah. हाँ, मैं आपको वीकेंड तक कॉल करता हूँ. वीकेंड तक. हाँ सर, मैं कल परसों में बहुत आगे पीछे हूँ. एनीवे अच्छा, दैट आई विल पर्सनली, है ना, हाँ आपसे बात. ठीक है, कोई बात नहीं. Right, so guys, let me know your feedback in the WhatsApp group. सर इज इट लाइक रिकॉर्डेड लाइक मतलब क्या होगा लाइक ये जो ट्रेनिंग आप मतलब कितने ऑन साल द का एक्सपीरियंस है रणबीर? मेरा लाइक 2 years. 2 years. हाँ. ओके. और ठीक है, काम करो, ये मीटिंग के बाद मुझे फोन करो, मैं समझाता हूँ क्या होगा, कैसे होगा. बेसिकली रिकॉर्डेड नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी लाइव सेशंस. जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया ना, आज ये 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे ख्याल से, हम्म. ऐसे ही सेशंस होंगे. अच्छा, और जो डैशबोर्ड आपने लाइक शो किया वो क्या मतलब डेटा आप ही दे देंगे और मतलब. मैं डैशबोर्ड बनाते सिखाऊंगा. ओके. So there is a Power BI expert who will come and take your session and explain you कि इसको किस तरह से बनाते. लेकिन उससे पहले कौन से मैट्रिक्स कैप्चर करने हैं, उस मैट्रिक्स को कैसे लिंक करना है, उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजिक थीम्स बनानी है, ये डैशबोर्ड तो बहुत एंड का पार्ट है. उससे पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो वो सीखना जरूरी है सबसे पहले. डैशबोर्ड तो क्या है, किसी को भी 5,000 दो दोगे ना तो वो बना के दे देगा तुमको. उसको एक्सेल की फाइल दे दो, 2 दिन में बना के रेडी करके भेज देगा तुमको. दैट इज नॉट द चैलेंज, बट वो एक्सेल फाइल में डालना क्या है, दैट इज मोर क्रिटिकल. गुड गुड. है कि नहीं? हम्म. सो फंडामेंटल वहां पे क्लियर करने हैं हमको. अंडरस्टैंडिंग उस चीज की होनी चाहिए कि कौन सी चीजें हमको स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स देंगी. गॉट इट सर. थैंक तो इसकी मेरी बैच स्टार्ट हो रही है 3rd week of May में. सो आप अपना जो ग्रुप बना है उसमें से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली 3 to 4 people. सो जिनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी हो तो बता देना मेरे को. यू. ओके सर. हाँ, Definitely, लेकिन sir. उसमें फिर टाइम एनर्जी एंड एफर्ट्स लगेगा उसमें, क्योंकि हर वीक असाइनमेंट्स होंगे, वो कंप्लीट करने होंगे, नेक्स्ट सेशन में उसके प्रेजेंटेशंस होंगे. राइट. और फिर बाद में एक कॉर्पोरेट पैनल होगा एचआर हेड्स का, जो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करेंगी. और फिर तुम्हारे रिज्यूम्स और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स जो है अलोंग विथ योर रिज्यूम विल बी सेंड टू 20 कॉर्पोरेट्स. कि भाई ये बंदे हैं जिन्होंने इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए हैं और उनका नॉलेज बेस अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो आप इनको रख सकते हो अपने साथ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो. Makes sense. सॉरी. Makes sense a lot, at least to these guys. हाँ अरुण, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अभी इनको एलेम्बिक है, या फिर तुम्हारा अपोलो टायर्स है, या सीएट है, एमआरएफ है, पैनासोनिक है, अदानी है, कोई पहुंचेगा नहीं, इनके सीवीज वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं.
कभी नहीं किया। बहुत मुश्किल।